Hello my dear juniors, welcome to 360 class. Today in this problem solving series, we are going to discuss the problems related to electricity. So let's kick out the problems. So the first problem is, what are the types of electric surge? What are the types of electric surge? So electric surge कितने प्रकार का होता है? There are two types of electric surge. Two types. Number one is negative surge and positively surge. Okay, so there are two types of electric surge. One is negative surge and one is positive surge. So the second problem is, the surge acquired by a glass rod wrapped with silk cloth is called what? Positive surge. So the next problem is, the surge acquired by an ebonite rod wrapped with woolen cloth is called what? Negative surge. Negative surge. The next problem is, what are the important properties of electric surge? Electric surge का importance property क्या क्या होता है? So there are two important property of electric surge. Number one is, opposite charges attract each other. Opposite charges क्या करता है? Each other attract करता है, एक दूसरे को क्या करता है? Attract करता है. हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है. हम लड़के हमेशा क्या होता है, लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की भी हमारे बॉयज की तरफ ही अट्रैक्ट होता है. उसी तरह सो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल्सो पॉजिटिव एंड negative will always attract each other. And the second one is, similar charges repel each other. That means girls will always what? Repel each other. Girls friendship कम ही होता है. जैसे कि हमारे फैमिली में अगर देखें तो लड़के के साथ मम्मी के साथ बहुत मिल होता है और पापा के साथ लड़के के साथ होता है. ठीक है, तो उसी तरह हमारे फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है. ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, बट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. नेगेटिव एंड नेगेटिव विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. ओके, so these are the important properties of electric charge. Number one is, opposite charges attract each other, then similar charges repel each other. So the next problem is, what is the SI unit of electric charge? What is the SI unit of electric charge? That is, SI unit of electric charge is coulomb. Okay, coulomb, which can be denoted by what? C, the letter C. The next problem is, an electron possesses a negative charge of, एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना नेगेटिव चार्ज होता है? दिस इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स में. तो एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो एक कूलम में कितना चार्ज होता है? सो एज वी नो हमें यह पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है. तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर minus 19 electrons. Okay. Then if we solve this, we can write like this: 10 by 16 into 10 power 19. So this can be written like this: 100 upon 16 into 10 power 18. So which can be written like this: 6.25 into 10 power 18 electrons. This is equal to this. Okay, so 1 electrons is equal to 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 power
18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। हमारे 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? 6.25 into 10 power 18 electrons. Okay, so this is very important. So from this we can say that coulomb is a very large unit. Okay, coulomb is a very large unit of what? Electric source. So the next problem is what are called conductor. Okay, conductor क्या होता है? Those substances through which electric surge can flow. Electric surge can flow are called what? Conductor. Now, what is flow of electric surge? Flow of electric surge is flow of electric surge. Flow of electric surge is what? Called electricity. So we can say that those substances through which electricity can pass are called what? Conductor. For example, iron, or even all the metals. Okay, all the metals are what? All the metals are good conductor of electricity. Okay, then iron, then tin. You can say tin. All these are what? Good conductor. So the next problem is what are called insulator. So just opposite of conductor. So those substances through which electric charge cannot flow are called what? Insulator. It can also be defined like this: those substances through which electricity cannot pass. Okay. For example, plastics, then glasses. Okay. All these are what? Insulator. Now the next problem is what makes a material conductor. मटेरियल्स कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल. मेटल्स में क्या होता है? मटेरियल्स. ओके, मटेरियल्स में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, और यू कैन से दैट इट विल कंडक्ट व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मटेरियल्स मेक इट व्हाट? गुड कंडक्टर, और यू कैन से कंडक्टर. So the next problem is what are the two types of electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार का होता है? There are two types of electricity. One is what? Static electricity and current electricity. Okay, which we will discuss in our next video. Okay, so this is all about today's video. अगर वीडियो अच्छा लगा तो please like, share, comment and subscribe the channel. So thank you for the watching.